In this video series, I'm going to talk about the entire scope of all the questions that can come in your MBA interviews. Starting off with one question that will come in every single one of the interviews that you will give. Tell us something about yourself. Now, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के कई सारे तरीके होते हैं. Mostly what worked for me is that I divided the question into three separate parts: introduction, job or college, and then finally conclusion. So here is how I used to introduce myself. So whenever I would hear the question, tell me something about yourself, I would say, sure. My name is EnvIshaan. I was born and raised in Ghaziabad and I studied engineering in computer science from Bennett University. And since then, I have worked as a sales representative at an up and coming startup based out of US and Canada. So introduction में मैंने क्या क्या किया? I kept it crisp, 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अपना नाम बता दिया मैंने, where I studied, where I was born and brought up in, and where I currently work. Now, why are these things important? जब आप अपना पूरा इंट्रो जो है वो 2 या 3 लाइंस में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के बीच में खत्म कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इफ द इंटरव्यूअर इज नॉट रियली लुकिंग टू स्ट्रेच द एंटायर इंटरव्यू आउट क्वाइट अ लॉट, वो क्या करेगा, वो वहीं पे आपको रोक देगा. यहीं पे आपने 3-4 चीजें बोल दी हैं आपके जॉब के बारे में, आप कहाँ पे पैदा हुए थे और कहाँ पे आपने अपना कॉलेज किया है. इन्हीं चीजों के अंदर से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे. नेक्स्ट, जॉब के बारे में क्या बात करनी है. I would like to believe I have justified my core responsibilities as I generated the highest pipeline in my batch with the highest number of show-ups, also excelling at various other metrics. I was also unofficially given the responsibility of ramping up a team of anywhere between 4 to 6 newly recruited SDRs. यहाँ पे मेरा जॉब रोल खत्म हो जाता है. इसमें मैंने क्या किया, कई बार क्या होता है कि आपका एक मार्केटिंग रोल हो गया या एक सेल्स रोल हो गया, जहां पे आपके पास कई सारे की मेट्रिक्स गिवन होते हैं. आप उन मेट्रिक्स के बारे में बात करिए. आप बात करिए कि आपने उस रोल के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें की हैं, उससे आपका पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है. और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने हो सकता है जॉब ना की हो, या आपका स्टार्टअप या आपका खुद का स्टार्टअप हो, या आपने एक इंटर्नशिप की हो, या हो सकता है आप अभी भी कॉलेज स्टूडेंट ही हो, तो वहां पे आप जॉब के बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट व्हाट वाज योर स्टैंडिंग इन योर कॉलेज, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपने लिया होगा आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. कोई कमिटीज का पार्ट हो उसके बारे में बात कर सकते हैं. कोई कॉलेज फेस्ट आपने ऑर्गेनाइज किया हो उसके बारे में बात कर सकते हैं. सो यहाँ पे कई सारी चीजें होती है बात करने के लिए. यहाँ पे मैंने अपने जॉब रोल के बारे में भी लिखा था, बट आप अगर चाहें तो आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट फ्लो यही रहेगा. इंट्रो के बाद ही आपका जॉब रोल रहेगा. थर्ड, आउटरो. आउटसाइड ऑफ वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग रिलेटेड टू फुटबॉल एंड क्रिकेट. Although I have lost touch with cricket quite recently, other than that, I enjoy critiquing movies and shows, listening to rap music, and writing poetry. Now, this can change from college to college. This is something that I would have done in a more mica kind of an interview, जहाँ पे the interviewers are more interested in how you are as a person, rather than किस टाइप की आपने जॉब की थी, कि आप कौन से कॉलेज में थे, आपने क्या काम किया था वहाँ पे. यहाँ पे this outro can also change. यहाँ पे you can extend your job section even more, or you can talk about other achievements that you have done in the past few years. याद रहे कि never talk about anything lesser than class 10th. Class 10 से नीचे आप जैसे ही जाएंगे, they don't really care about that as much. So class 10th or above, if you have any particular achievements, please do talk about that. So that's question number 1 done. Now we come to the second question, which is why MBA. Every single time you are asked a question, try to divide it into a certain sections. यहाँ पे मैंने बोला जैसे कि there are 3 reasons why I primarily want to do an MBA. I like to have a generalized overview of things. I believe I can get the best out of people. It's like I'm solving a puzzle. Different pieces. All of them cannot alone make you see the whole picture, but put them together, one after the other, and you have got something beautiful. I like guiding projects to completion, coming up with ideas, being a teacher basically. An MBA can afford me the opportunity to achieve that dream. यहाँ पे मैंने क्या किया? Why do you want to do an MBA? मेरी जिंदगी में कुछ तो रहा होगा. Why I wanted to become a manager. Talk about that. Talk about what's your vision as a manager. For example, यहाँ पे मैंने बोला है I like putting the entire picture together. कई सारे पीसेस अलोन. कई बार होता है कि टेक टीम हो गई, एक एचआर टीम हो गई, एक आपकी सेल्स टीम हो गई, ये सब डिफरेंट काम करते हैं एंड इट वर्क्स. But if you have a central figure, for example myself in that particular situation, I can guide all of them to completion. I know the entire picture. They don't necessarily have to. They just have to know उनका part क्या है. But you knowing the entire picture as the manager is really important. So that अगर आपने अपने टेक टीम को कोई चीज काम करने के लिए दी, मान लीजिए आपने उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे दिया है, या फिर एक नया अपडेट आया, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, so they should only know about that part. सिमिलरली अगर आप अपनी सेल्स टीम के पास जाके बोलते हैं कि हमारा एक नया प्रोडक्ट आया है, दे शुड ओनली नो अबाउट दैट. फ्रॉम देयर दे विल बी एबल टू पिच इट टू पोटेंशियल कस्टमर्स. सो नोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एज अ मैनेजर. सो दैट्स पार्ट 1. Second, while I have experience in sales, I am interested in creating marketing strategies
understanding consumer behavior, and learning the ins and outs of mass marketing campaigns. With my current experience in sales, I already understand that a good or not so good product is just one aspect of sales cycle. It has many more components. दिस विल बी पार्ट नंबर 2. नाउ अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो आपको फाइनेंस के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ये एचआर में जाना तो एचआर के लिए आई गेट इनटू इट एट अ लेटर डेट, बट दिस इज प्राइमरीली फॉर सेल्स और मार्केटिंग. नाउ दिस क्वेश्चन वाज रियली इजी फॉर मी टू टैकल बिकॉज मैंने सेल्स रोल कर रखा है. समटाइम्स यू माइट नॉट हैव डन अ सेल्स रोल, तो हमने आप हो सकता है आप लोगों ने टेक रोल किया हो, तो उसके अंदर मे बी यू कैन टाई इट अप टू प्रोडक्ट्स. सो आप लोगों ने प्रोडक्ट्स डेवलप किए होंगे. यू कैन टॉक अबाउट हाउ यू नीड डोमेन एक्सपर्टीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट इन एंड आउट, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट व्हेन यू आर गोइंग टू पिच अ प्रोडक्ट टू मे बी एन इन्वेस्टर और मे बी a client or customer or something like that. So वहाँ पे you can talk about how it's important to कि आपने एक जो जॉब रोल कर रखा है वो आपको हेल्प कैसे करेगा आपके पर्टिकुलर डोमेन में. मे बी आपको मार्केटिंग करनी ना हो, मे बी आपको फाइनेंस करना हो, सो यू जस्ट हैव टू मेक दोज टाइज. थर्डली, मैंने तो एक स्टार्टअप किया था, सो आई टॉक्ड अबाउट दैट कि my XYZ startup had various problems like setting up the company, legal framework, funding and business, paying salaries and scaling the business. You can talk about आपके कॉलेज में आपने क्या कर रखा है. मे बी आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया हो, मे बी आप किसी कमिटीज का पार्ट हो, मे बी आपने कोई पीपीओ उठाया हो. सो यू कैन टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और द पॉजिटिव्स दैट यू हैव हैड in your field of study. Next, the final question that we will tackle today is the strengths and weaknesses. So strengths are easy to tackle. You can literally go online, look at all the adjectives that are there, maybe tie some up to yourself and then elaborate on them. Hardworking, obedient, वगैरह वगैरह. Strengths are easy to tackle. The weaknesses are the issue. Weaknesses के अंदर you cannot actually talk about things that have hindered your career or your college life. You have to talk about strengths only, but talk about them कि maybe you overdid them and that's why they became a weakness. For instance, the three weaknesses that I talked about were overthinking, I wasn't well traveled, and then one of the medical issues that I've had. Now, if you're not comfortable talking about medical issues, maybe you can look for something else like this. Now, overthinking, and then I talked about how I oftentimes sabotage myself or spend too much time worrying about variables that I cannot control. And in not well traveled, I talked about I don't have exposure to different regions of the country, so I lack insights into their culture, behavior, and mannerism. And I also talked about how travel brings confidence and affirms independence. So remember this, whenever you talk about weaknesses, you also have to talk about their solutions. How are you going to tackle them eventually? So when I talked about overthinking, I said I'll try to find repeating patterns and keep them at bay. And when I talked about I'm not really well traveled, I talked about how monthly trips to a different cities for a couple of days might help me. Strengths are easy to tackle. Weaknesses के अंदर भी you can get weaknesses all you want. Don't talk about them like they are your therapists. They are only there to ask you particular questions to get to know how you tackle them. So whenever you talk about a weakness, make sure you give a solution कि आपने पहले इसको कैसे टैकल किया था या आगे जाते हुए आप उसको कैसे टैकल करेंगे. So make sure you talk about these things. That's about it for this particular video. I will come out with more videos, maybe 3 to 4 in a particular series. For XLRI, NMIMS and MICA, I will come out with more specific videos. And yeah, that's about it today. See you next week.